Hello, hi, namaskar. This is presented by Ipshita. So, in the last video, we all studied all about the Sankhya philosophy and its educational implications. So, here in this video, we are going to learn all about the Vedanta philosophy and its educational implications. So, let's start the videos, okay? So, are you all ready? Okay, so let's start. So, in the last video, we all studied about the Sankhya philosophy and its educational implications and how it really categorized into the various type like one is the two dualistic in natures and it is two basic types. One is that is the matter, another one is that is the self spirit, purushas and prakriti concepts and all that. So ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା କି ବେସିକାଲି ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆର ବେସିକ କନସେପ୍ଟ କଣ ଅଛି। Similarly, our educational implications कौन रहुची हमर जहाँ कैटेगराइज्ड है वेदांत फिलोसफी उपरे तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। तो फर्स्ट होची हमर कौन ना आमे बुझिथिले वेदांत होची गोटे कौन हमर आइडियलिस्टिक कांसेप्ट तो सांख्यटा होची हमर कौन ना रियलिस्टिक कांसेप्ट। वो प्रीवियस वीडियो रे भी जिनसटा कहिथे आपण बहुत भल से बुझि देछि तो टू कैटेगरीज रे रहबो जिनसटा। सो वेदांत माने होची हमर कौन ना दैट इज आल्सो नोन एज एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास को हमें कौन कहवा ना वेदांत पीरियड बड़ी हमें ताको कहवा। और गोटे जिंस होची कोन ना एंड ऑफ द वेदास पीरियड को पीरियड स्टार्ट हैला ना उपनिषद पीरियड टा केतला स्टार्ट हैला ना जेतला हमर एंड ऑफ द वेदांत पीरियड्स जेतला स्टार्ट हैला वेदांत पीरियड जो स्टार्ट होची इनिशियली सेतला हमर कोन उपनिषद पीरियड रा स्टार्ट हैला। एंड जोडे के हमरा कोन एक्सप्लोर कला वेदांत फिलोसफी जे फर्स्ट होची हमर कोन गोटे इंडिविजुअल सेल्फ कांसेप्ट को एक्सप्लोर कला और होची हमर कोन दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सेल्फ मींस होची गोटे आत्मान कांसेप्ट को जोडा रिप्रेजेंट करची और डेटा रियलिटी होची कोन आत्मा ब्रह्मा ब्रह्मा फिलोसफी सेटा रिलेट करूची सेमतिडा कोन एम्फेसिस को विजन ऑफ and objectives through ज्ञान और knowledge and the theory of Vedanta which is paired with Mimamsa concept. Okay. Now next हमें कौन देखिबा जे मुझे एमती कहिथिला ऑर्थोडॉक्स हमर ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ द स्कूल्स हमें प्रीवियस वीडियो पढ़छि जे हमर छडा ऑर्थोडॉक्स कोन कोन रहिला आउ तापरे हला कोन ना हमें हेटेरोडॉक्स भी काहो कहबा जो थे कि हमारे एक्जिस्टेंस ऑफ वेदस जोटा हमें जोटा कि वेद को प्रायोरिटी दिया ना दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स छटा कैटेगरीज करा हेतला और से बेले ऊपर हेटेरोडॉक्स जोटा कि रिजेक्शन ऑफ वेद जोटी टेक्लेस हला ताको में कोन बोली कहबा ऑर्थोडॉक्स आल्सो नोन एज द हेटेरोडॉक्स पीरियड से जोटा रहला वेदस आर आल्सो कॉल्ड एज द श्रुति अदरवाइज कह परिवा देखिए कोन as the one is the Rig Vedas, Yajur Vedas, Sam Vedas and Atharva Vedas. ठीक अछि तो ऋग वेद रे कोन रिप्रेजेंट करछ ना इंट्रोडक्शन ऑफ टू मंत्रस एंड प्रेयर्स। यजुर वेद रे कोन रहउछ ना रिचुअल्स और सेरेमोनियल इंस्ट्रक्शंस रहउछ से बली मेलोडीज रहबो एंड अथर्व वेद रे हमर कोन ना मैजिक स्पेल्स रो कांसेप्ट एठी रहउछ। ठीक अछि रही हमर सांख्य सूत्र थिले कांसेप्ट आसे सेची सूत्र नेक्स्ट विवेक चूड़ामणि कांसेप्ट किए करछे ना बाय आदि शंकराचार्य नोन एज is a source of Vedanta. ठीक है so there are कौन आछि ना there are basically 4 chapters of Vedanta Sutras. किसका आछि ना चारटा आछि हमर कोन ना सूत्र आछि हमर कोन ना वेदांत सूत्र। फर्स्ट चैप्टर हमर कोन आछिबो
फर्स्ट चैप्टर बेसिकली एटा क्वेश्चन आसे हमर नेट एग्जाम्स हो कि B.ED हो कि M.ED एंट्रांस हो जहाँ भी हो कि हमें एजुकेशन रिलेटेड किसी भी एंट्रांस होते बट एटा होचे प्राइम जिंस जोटा कि हमर एंशिएंट इंडियन फिलोसफी रो कांसेप्ट जेटा क्वेश्चन आसे सिविल सर्विसेज हमर जो ओएस एग्जाम अछि हो सबुथरे आसे क्वेश्चन तो बेसिकली एटा सब में वर्क जिंस ओडा किछटा जो नवा कांसेप्ट अछि वैदिक कांसेप्ट आपको टिके ना हमको माने मन रखिया पड़ियो से सब जिंस फर्स्ट हूँ आम कौन ब्रह्म दैट इज नोन एज द सुप्रीम रियलिटी सो ये कौन कहला ना ब्रह्मटा हूँ आम कौन सुप्रीम रियलिटी कनसेप्ट ओके आउ उपनिषद रोटा हूँ आम कौन सेंट्रल रियलिटी तो बेसिकली चैप्टर 1 टा हमर काहा को रिलेट करछि ना ब्रह्म कनसेप्ट अछि तो दीटा एठी कनसेप्ट रहला वन इज आत्मा दैट इज इंडिविजुअल सेल्फ अनदर इज द ब्रह्म तो ब्रह्मटा हमर कौन रिप्रेजेंट कला ना हमर फिलोसफी ऑफ रियलिटी कनसेप्ट को रिप्रेजेंट करूछि आउ कौन कौन एठी रहबो कि बेसिक एटा हूँ इंपोर्टेंट कि ब्रह्म कनसेप्ट फर्स्ट चैप्टर डील करूछि पर्पस so the teachings रहिबा आ consistent and रहिबा so the scripture speaks in one voice and सिकासिला हमर जिनसर द अल्टीमेट रियलिटी ए जो कांसेप्ट आसिला अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म एटा होची द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ठीक अछि तो सेकंड चैप्टर पे जेबा कोन आसिला सेकंड चैप्टर कोन कहूची ना हमको basically views or criticizes related किछि भी आसिला that is relates to views and criticize basically relates to the second chapter ठीक अछि तो एथि कोन आसीबो तो बेसिकली views और criticisms कहा को नहीं आसला ना एट देछि that it refutes the objections raised by the views and criticize other philosophical schools जा कोन रहला सांख्य योग्य न्याय बुद्धिज्म and criticizes it as also criticize से करू पर्पस करहिला कोन prove the Vedanta is logically consistent and can withstand the critical philosophical analysis. Okay. Next conclusion there is no contradictions in the teaching of Vedantas with reason and other discipline when properly understood. So it basically relate views of criticizers basically relates second chapter. तो third chapter third chapter basically relate that is कौन नाम आसला साधना साधना जो कंसेप्ट है कहा को रिलेट करछि ना थर्ड चैप्टर को रिलेट करछि तो साधना मींस इट कोन मींस और प्रैक्टिसेस को रिलेट करछि एक्सप्लेन्स द पाथ कौन पाथ टू रियलाइज द ब्रह्म ब्रह्म को रियलाइज करे में जो पाथ अछि ताको रिलेट करी कि थ्रू कहा द्वारा ना नॉलेज मेडिटेशंस डिवोशंस एंड एथिकल लिविंग्स सेमती आर सिमिलर पर्पस फॉर व्हिच लिबरेशंस और मोक्ष बेसिकली एटा कहा को रिलेट करछन लिबरेशन ऑफ मुख्य कांसेप्ट को एंड कंक्लूजन कोन आसीबाटी ना सेल्फ इंक्वायरी एंड नॉलेज सेल्फ इंक्वायरी मींस दैट इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन कांसेप्ट सेटे को रिलेट करी कि जहां जहां भी अछि दैट लीड टू रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ ठीक अछि फोर्थ चैप्टर कोन अछि देखियो हमें फोर्थ चैप्टर टा बेसिकली रिजल्ट फल और दैट इज द रिजल्ट फल मींस दैट इज द रिजल्ट और फ्रूट फोर्थ चैप्टर टा जहां तीनटा कांसेप्ट रहिला देन एंड रे तार कोन हमर रिजल्ट कोन तो सेटा को एठी डिटरमाइन करिवो ठीक अछि तो फर्स्ट से हमर कोन ना to explain the nature of the final realizations and freedom concepts आउ गोटे होछि कोन हमर से the fruit of vedantic knowledge is eternal bliss and the freedom from ignorance ठीक अछि तो बेसिकली फोर्थ चैप्टर that which relates to the follow that is means results or fruit concept को जोड़ा के हमर रिलेट करूछि ठीक अछि तो देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांत क्लासिफिकेशन के कोन कोन कैटेगराइज्ड अछि और कोन कोन का फर्स्ट होछि हमर कोन आसिला हमर अद्वैत वेदांत के गिवन करथले ना गिवन बाय आदि शंकराचार्य सिमिलरली विशिष्ट अद्वैत के देथले ना रामानुजाचार्य थर्ड दैट इज द्वैत बाय माधवाचार्य फोर्थ द्वैत बाय निम्बर्काचार्य शुद्ध अद्वैत concept by पल्लवाचार्य these things to remember important these are very important और maximum MCQ questions ए related ही आसे जे हमरा वेदांत philosophy classification of वेदांत basic questions आसे basic questions और next हमर अचिंत्य भेदाभेद वै चैतन्य महाप्रभु ठीक अछि नेक्स्ट देखिए हमर कोन ना
that is Advaita Vedanta. तो Advaita Vedanta concept टा जेमती कहले कि देथिले ना आदि शंकराचार्य जे थिले से concept टाको term टाको given करथिले. So A means, I mean, Advaita Vedanta is a non-dualistic school. So Advaita, that is a, sorry. हाँ, तो ये देखिए अद्वैत वेदांत कहार आसुची हमर कोन ना A plus द्वैत. ठीक अछि. A means absence, that is known as the non, and द्वैत means dualism. Understand? এটা হচ্ছে আমার কোন না সন্ধি বিচ্ছেদ. তো অদ্বৈতটা আমরা কাহাকু নেইছি না A plus দ্বৈত নেকি কনসেপ্ট আমরা কোন হইছি না অদ্বৈত কনসেপ্টটা আমরা এটি রিলেট করছি. অদ্বৈতরে কোন আসবে আমরা কোন না A means absence or non dualistic characteristics. ठीक अछि. Absence of dualism characteristics, that is known as the Advaita, and that is given by, that is Adi Shankaracharya. ठीक अछि. Advaita means non-dual. A means non or absence, and Advaita means dualistic characteristics. Ascertaining the individual self, that is Atma, and the ultimate reality, that is the Brahma, are one and same. ହେଲା ତ କୋର କନସେପ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ଏଠି ଆମର କଣ ଅଦ୍ୱୈତ କନସେପ୍ଟର ଯେଟା ହଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଫର୍ମଲେସ୍ ଇନଫିନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଚାର୍ଜିଂ ରିଆଲିଟିଜ. ଆତ୍ମାରେ କଣ ଆସୁଛି ଯେ ଦିସ୍ ନନ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରିଏଲାଇଜିଂ ଦ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ. ମାୟାରେ କଣ ଆସୁଛି କନସେପ୍ଟ? ତ ମାୟାରେ ଆସୁଛି କଣ ନା ଆମର that is the world is the illusion, and maya which causes the ignorance of our true nature, and avidya, that is the ignorance. It is called to one of the cycle of birth and death. Mukhya कौन से how to get the liberations and ज्ञान होगा the path of knowledge केम जैसे वाला self meditations, inquiry, scripture studies and means to attain the realizations. ऐसी हिंसा आसीबा. विशिष्ट अद्वैत तो विशिष्ट अद्वैत किए करथिले ना हमर रामानुजाचार्य थिले से टर्म टाको कोन ना गिवन करथिले. तो इतना हमरो कौन आसे विशिष्ट ये रे विशिष्ट अद्वैत हमरो कौन आसे that is the non dualism of the qualified. देखो विशिष्ट plus A plus Vaita. विशिष्ट means specialized or that is qualified. A means केमती मु कहथि absence. ଆଉ ଦ୍ୱୈତ concept ମାନେ that is dualism. तो ଏଠି କଣ ଅଛି concept ଟା ନା whole concept ଟା determine କରୁଛି ଆମର କଣ ନା non dualism of the qualified. So it कौन से represent करूची ना it is a school that philosophy within the Vedanta tradition रे रखुछ एटा हमर कोन आ एटा कोन बेसिकली इंपोर्टेंस होची ना ब्रह्मा जोडा कि होची हमर कोन that is the personal god with attributes देछि हैला. Our individual soul, that is the jivas, and material world, that is the jagat, are the distinct but inseparable parts of the brahmas एटी represent करूची. ठीक अछि. तो जिनस वाला कौन ना ए जते कांसेप्ट अछि दिटा सब मेनली माने बेसिकली रिलेट करछि. फर्स्ट होछि हमर कोन दैट इज द इंडिविजुअल सेल्फ कांसेप्ट, अनदर वन दैट इज द सोलर आत्मान कांसेप्ट को एटा बेसिकली रिलेट करछि. आ सबुतरे कमन थे कैन बी दैट हाउ टू गेट द लिबरेशन. And the philosophy articulated by Ramanujacharya offer a qualified monoism acknowledging both unity and diversity with the divine concept. ठीक अछि. थर्ड रे असले हमर कोन द्वैत, that is द्वैत के देखे ना माधवाचार्य जे थे से कांसेप्ट को देखले. तो द्वैत रे कोन आसुची द्वैत कांसेप्ट माने कोन हमरा द्वैत होछि हमर कोन that is द्वैत means कोन dual or dualistic और कोन कहबा that is also known as the pluralistic concept बोले हम देखो कहबा जेमते देछि. One is a dualistic and the one is a pluralistic concept. It regards to the individual soul, the individual soul as separate from the Brahma, and also advocated the bhakti. It identifies the gods
with Brahma completely, and it on with the Vishnu's or incarnation of Krishna's. कृष्णा का कंसेप्ट जो रहा कि गॉड आउ ब्रह्म जोड़ा कि दैट इज कंप्लीटली विष्णु आउ कृष्णा का सहित जोड़ा कि हमर इनकार्नेशन वैसे से रिगार्डिंग कहिछि नो कंसेप्ट ऑफ माइंड किछ नै नो इल्यूजन कंसेप्ट वर्ल्ड एंड गॉड बोथ आर रियल एंड गॉड इज सुप्रीम एंड द क्रिएटर ऑफ अननोन ठीक अछि चार इसला हमर कोन ना द्वैत अद्वैत कंसेप्ट कि हमर एटा टर्म गिवन करथले ना हमर निम्बर का आचार्य जे रहले से कंसेप्ट को given करथले द्वैत मींस dualism और अद्वैत मींस नॉन dualism concept किए करथले ना निम्बर का आचार्य करथले कंसेप्ट को अब कौन करथले ना ब्रह्मा और जीव that relations may be regarded as the द्वैत from one point of view and advaita from another point of view three categories का ईश्वर that is god who is god divine or divine being highest supreme realities तीनटा कैटेगरी से करथले चित्त that is the jiva and Achita, that is the Achit means lifeless matter. Chitta or Chitta are different from the Ishwaras but are dependent on him. Next, that is the Suddha Advaita. Suddha means pure and Advaita means that is dualism, absence of dualism. So pure absence of dualism concept kame kona kahiba that is Suddha Advaita. A concept Suddha Advaita boli kahiba. तो ब्रह्म एडी कौन करेगा इज प्योर एंड नॉन डुअलिज्म ब्रह्म वाला एडी कोना प्योर और नॉन डुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्ट और जो हमर कोन यूनिवर्सल and solar part of the brahma but these are not illusion instead of real ଆଉ ଗୋଟେ concept ଏଠି କଣ କହୁଛି ନା this concept also encourages the bhakti as the only means to get the liberations to go to the golaka that is the golakana the world of laws and world is said to be the spot of krishna with सत चित आनंद ए कंसेप्ट आस्ते कि गिवन करथिले बल्लभाचार्य देथिले हमर कोन सच्चित आनंद कंसेप्ट को गिवन करथिले कोठी ना सुदोदित कंसेप्ट रे ठीक अछि नेक्स्ट that is the achintya veda achintya means that is inconceivable veda means a difference and aveda means non differences तो बेसिकली एटा को रिप्रेजेंट करन इनकन्वेंशिएबल डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंशियस को जोडा रिप्रेजेंट करे सेटा कोन करबा ना मैं अचिंत्य भेद भेद बोली कहिबा गोटे टर्म टा किए गिवन करथले ना हमरो कि चैतन्य महाप्रभु थिले सी ए टर्म टा को गिवन करले दिस टर्म इज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु ठीक अछि एंड एटा कोन करछि हमर डिफरेंस और नॉन डिफरेंशियस कांसेप्ट को रिप्रेजेंट करिछि और कोन कहछि ना भक्ति ओरिएंटेड डिवोटीज ऑफ कृष्णा दिस डॉक्ट्रिन इज फॉलोड बाय the world famous ISKCON movement ठीक अछि नेक्स्ट कोन देखिए आर मेटाफिजिक्स कोन रहउछि जेमिति हमर इंडियन फिलोसफी ब्रांचेस अछि सेमति आर गोटे वन ऑफ द ब्रांचेस अछि मेटाफिजिक्स तो मेटाफिजिक्स को रिलेट करछि हमर तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ द यूनिवर्स इज कोन अछि तो जानिबा कोन से अल्टीमेट पर्पस अछि हमर वेदांत फिलोसफी रो फर्स्ट होछि हमर कोन एकाम सत्मन एटा क्वेश्चंस आसे बहुत मत that ekam satman means that is one realities okay and Brahma is the ultimate reality. World is not real, it is all Maya. Epistemology ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ branches ଥିଲା ନା branches କଣ ଥିଲା ନା the process of knowing knowledge ତମେ କଣ କହିଲେ ନା epistemology ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କଣ ପର ବିଦ୍ୟା it is known as the spiritual knowledge and upper vidya that is also known as the practical or worldly knowledge ଠିକ ଅଛି knowledge can be acquired through the shravana that is the listening manana that is the thinking and nididashan that is the practical aspect ठीक अछि तो तीनटा वे रे हमें नॉलेज से एक्वायर कर श्रवण मनन एंड निदिदर्शन श्रवण मींस लिसनिंग मनन मींस थिंकिंग लिसनिंग एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थर्ड देखिया कोन एक्जियोलॉजी व्हाट इज वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज कोन इथरे अछि एक्जियोलॉजी रे फर्स्ट हो जमा करना that is the duties of loyalties and honestly how to realize the eternal universal self on man and to practice the self control desirelessness and concentrations of mind इतने सब रिलेट करी हमर करना that एक्जियोलॉजी को रिलेट करूचे तो देखिया कोन हमर कोर्स कांसेप्ट तो कोर्स कांसेप्ट बेसिकली कोन रिलेट करूची कोर्स मींस दैट इज अ शीट और लेयर तो हमर जो रहला वेदांत फिलोसफी रे पांचटा कोर्स रहउची कितना रहउची कोर्स कांसेप्ट तो कोन से विषय में जानवा चाहते फर्स्ट होची मोर कना कोर्स कांसेप्ट होची मोर फंडामेंटल आइडिया इन द वेदांतिक फिलोसफी रो जोड़ा फंडामेंटल आइडिया तो एथरा हमर कोनस्टना में तैत्रीय उपनिषद रेटा डिराइव करूची हमर कांसेप्ट जेथरे हमर कोन होची पांचटा कोर्स कांसेप्ट को
5 C's short questions जोड़ा कि एटी बहुत सारा क्वेश्चंस आर एटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट है और जिनसे मन पे पड़ियो कि कोसो कांसेप्ट कोन तो 5 टा हो वन ऑफ देम दैट इज द अन्नमय कोष तो पंचटा कोष कांसेप्ट कोन कर अन्नमय माने होची फिजिकल जोड़ा कि मेड अप करती हमर जो आउटर बॉडी लेयर पार्ट रहिला हमर स्किन लेयर गुडा को स्किन जो मेड अप फ्रॉम द अनस दैट इज मींस फूड एंड द सीट इज मेड ऑफ दैट इज द फूड और मैटर ओके एंड द वन इज तो कौन फिजिकल बॉडी ला बोन्स रहिला हमर मसल्स रहिला ऑर्गन जो रहिला हमर that is known as the ornamatosis and the outer body that you can touch and feel that is known as the ornamatosis. Ornament that is the food and the food that which makes the outer layer that is known as the ornamatosis. Pranamaya kosa that is known as the energy bodies. जैसे जो इनहेल करने को आउ एक्सहेल करने को हमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट इज नोन एज अ प्राणामय कोश दैट इज नोन एज द हमर कोन वाइटल एनर्जी Prana means life or force or breath. Energy system like breathing, circulations and digestions. It जिनसे आप relate करूची. Our physical bodies and alive and functioning. Our breath and bodily functions like heartbeat. हमारा function को थोड़ा कि हमारा काम का हरना प्राणमय कोश. Third, that is the monomaya kosa that is known as the mental shift. Monomaya means mono, that is manasa means mind, and the thoughts, emotions, sensory jaha amar mind jaha chalchi, and monomaya kosa entirely amar kona na mental shift layer ko relate karuchi. Are responsible for desires, feelings like dislikes and emotions and reactive mind. Next, that is known as the Vigyanamaya kosa. The Vigyanamaya kosa hochi amar kona that is known as the wisdom teeth, wisdom teeth. And wisdom sithra mana kona asibo na Vijnana means knowledge or intellect. The intellect discriminations of higher understanding of knowledge distinguishes the right from wrong. Right कौन wrong कौन सेटा को distinguish कर विज्ञानमय क्वेश्चन. Next हमें कौन देखिए ना आनंदमय क्वेश्चन. आनंदमय क्वेश्चन हमारा कौन आସୁଛି तो first होची हमारा कौन आनंद means bliss and bliss related to the आनंदमय questions. The layer of deep joy, peace, and spiritual happiness, then experienced in the deep sleep or deep meditations, and the innermost peace and content. The educational implications that is the Gotochi Vedanta philosophy of Advaita Vedanta emphasizes the self-realization, inner knowledge, and the unity of existences. Who relate to Kota Namara Advaita Vedanta? Second, curriculum. Curriculum balanced curriculum spiritual moral education priorities दियागला character building subjects to be priority देला कौन subject आश्रय हमारे spiritual scriptures like Upanishad and Bhagavad Gita. तापर character building रे कौन ethics, philosophy, stories, saints and sages. Science and secular knowledge रे कौन tools for the practical knowledge but not the ultimate truth. Yoga and meditation हमारे कौन self discipline and self awareness concept. Then role of the teacher रे कौन like guru, a teacher is a guru and to help realize this true self and emphasis on the Guru Shishya Parampara that is a teacher student traditions and basically the role of the students that is a Shraddha, faith, tapas or discipline and Samarpana that is a devotions. Education is self-driven and inquiry that is the Jnana and contemplations that is the Dhyana and it is a lifelong learning for the inner growth. Next on the teaching methods to ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରବଣ that is a listening process and ମନନ that is a thinking and nididation that is a practical aspect. ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୌଣସି value emphasis truth, ସତ୍ୟ, non-violence, ahimsa, self-control, brahmacharya, compassion, karuna and detachment that is a vairagya. Thank you. तापर हम नेक्स्ट वीडियो रे कोन देखिबा हमरो जहा अछि हमरो वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी हमरो थॉट्स कोन अछि वेस्टर्न थिंकर्स मानकर लाइक आइडियलिज्म कोन रिप्रेजेंट करूछि नेचुरलिज्म कोन अछि रियलिज्म सो देखिए नेक्स्ट वीडियो रे तो थैंक यू वेरी मच कीप स्माइलिंग बाय बाय